So, hello everybody. I hope you all are doing great. And finally, I am back after a long period. आप सोच रहे होगे कि मैं इतने दिन से कहाँ था? But actually, the main reason is that you all know that I am as I am a student. Currently, I am in class 12, so मेरे बोर्ड्स भी आ रहे हैं. अभी वेकेशंस चल रहा है. मेरा प्लान था बहुत वेकेशंस में क्लासेस मतलब ऑन बहुत ज़्यादा वीडियोस करने का. But the things didn't go that much well. बैकलॉग्स इतने बज गए मेरे. ऊपर से मेरा वो था मेरा ट्यूशन, स्कूल के प्रोजेक्ट्स, द मेन थिंग. बिकॉज बीइंग अ पीसीएम स्टूडेंट इट्स नॉट दैट इजी. मैं वो नहीं बोल रहा क्या मतलब पीसीएम तो समझता है कि सबका ही काम है. बट मेरा ये प्रोजेक्ट की वजह से मेरा इतना मतलब टाइम वेस्ट हो गया. बट अब क्या करें. बट फाइनली आई एम बैक. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्लियर दैट मैंने ड्यूरिंग दिस वेकेशन आई ऑल्सो थॉट दैट कि मैं बस कोडिंग के वीडियोस नहीं अपलोड करा करूँगा. आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड दैट ड्यूरिंग माई वीकेंड्स और ड्यूरिंग एनी हॉलीडेज आई विल रैदर डू अ लाइव स्ट्रीम वेर आई कैन इंटरेक्ट विथ यू लाइव, जिसमें मैंने और भी सोचा है कि मैं कुछ गेमिंग रिलेटेड वीडियोस भी डालूँगा. और उसके साथ साथ मतलब गेमिंग तो होगा ही होगा और लाइव स्ट्रीम में भी मैं गेमिंग कर सकता हूँ. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन विथ मी देयर. एंड अगर मन किया तो मैं लाइव स्ट्रीम में आपको कोडिंग भी सिखा सकता हूँ. दैट्स ऑल अप टू माई मेरा क्या मतलब मेरा शेड्यूल रहता है. बट आई कैन अश्योर यू दैट वीडियोस अभी आएंगे. महीने में एक नहीं तो दो तो आएंगे ही आएंगे. और मैंने ये भी सोचा है कि मैं अब 8, 9, 10 प्लस 11, 12 का भी कोडिंग वोडिंग कराऊँगा. और कुछ अगर मतलब थ्योरी बेस्ड चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगा आपसे. सो दैट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन एंड लेट्स गेट रेडी फॉर द वीडियो. आज का टॉपिक हैज़ वी हैव सीड इन द प्रीवियस क्लिप. आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्ट पासिंग एज अ पैरामीटर. ये टॉपिक इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग. दिस टॉपिक इज़ वाइडली यूज्ड इन सम ऑफ द स्कूल्स इन क्लास 11 और मोस्ट प्रोबेबली आपके क्लास 12 ISC में तो आने ही वाले हैं जावा के. दिस चैप्टर अलोन इज़ हैविंग द वेटेज ऑफ 30 to 40% इन योर एग्जाम्स. दिस इज़ अ ट्रिकी चैप्टर. बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें हम लोग जैसे भी पास वेरिएबल्स इन द फंक्शन वाइल कॉलिंग देम, इन दिस वी पास ऑब्जेक्ट्स created by the user to the functions and that functions are also very different because वो functions यूज़र डिफाइंड होंगे जो हम लोग क्लास का जो नाम देंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मतलब अगर हम लोग क्लास कलेक्शन दे रहे हैं फंक्शन शुरू होगा कलेक्शन सेम एज द क्लास नेम और उसके बाद जो हम लोग देंगे और पैरामीटर लिस्ट में है जो उसमें हम लोग कलेक्शन और वेरिएबल देंगे. बट हियर इज़ द कैच. वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट जो हम लोग पास कर रहे हैं जो स्टोर करेगा. और अगर रिटर्नेबल फंक्शन हुआ तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा टू द कॉलिंग ऑब्जेक्ट वेरिएबल. लाइक अगर मेरे को अगर रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट में अगर मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं लेट अज्यूम 3x3 मैट्रिक्स, तो मैं 3x3 मैट्रिक्स को ऑब्जेक्ट पास करूँगा. वो एज अ पैरामीटर स्टोर होगा. फिर वो सब ऑपरेशंस कंप्लीट करने के बाद वही मैट्रिक्स जो नया वाला है वो एक करेंट ऑब्जेक्ट में पास होके मुझे वो कॉलिंग फंक्शन में रिटर्न होगा. सो फ्रॉम देयर आई कैन ऑल्सो यूज़ दिस न्यू करेंट ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट फंक्शंस लाइक फॉर डिस्प्लेइंग द करेंट मैट्रिक्स, द न्यू मैट्रिक्स and other related stuff. So now I will be sharing you with the code for how to write a program using object creation for the topic collection or a matrix, a simple matrix program I will start today. The other class will be having a different approach for a new matrix program
that will be shared within this week or next week. So please stay tuned. So here, as you can see, this is my BlueJ window. So first I need to create the class matrix, which you have seen in the question. The question was create a class matrix containing a 2D array of m into n. This will be used to find a maximum value possible for both m and n, and the description or the details of the classes are given. We will doing by object as a parameter method. So first we need to create the class matrix. So now I have to create the class matrix. So here I have got the class matrix, which in which we will be doing the program. You can see the normal class. First I need to delete this. Now we will start writing with the program. So first star. Now the class name matrix. Now we have to create some universal or the variables declared universally, which can be used in any functions. The matrix, the size is m and n. Then here this is a parameterized constructor, जिसमें हम लोग ले सकते हैं मतलब जो हम लोग यूज़र से जो लेंगे साइज़, वो हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे m और n में. एंड मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दिस टाइम एंड फ्रॉम नाउ ऑन वीडियोस विल कम इन बोथ कमेंट्रीज. लाइक मैं हिंदी में भी बोल दूँगा और इंग्लिश में भी, क्योंकि बहुत जनों को हिंदी में भी समझना ईजी लगता है और बहुत जन को इंग्लिश में भी समझना ईजी लगता है. सो आई हैव डिसाइडेड दिस that will be happening from this video onwards. So int mm and int nn. Now we have to initialize m equals to mm, n equals to nm, and arr equals to new int mm. So here you can see that we have initialized or declared the array with the size m and n. So now we have to, what is the problem? Oh sorry, I have forgotten that this is a 2D array, so we have to do one more bracket. Now it is fine. Now we have to create a function void fill array for filling the array with elements in that will be taken as input from the user. Scanner class is required in everything while taking input from user. Then now give user the message for system.out.println that please enter elements in the matrix. Now we'll be taking the loop for accepting the elements. Now inner loop. Now we'll be accepting the elements.
Now the main thing starts from now on. Now we will be declaring the function with the name of the class. This is a returnable function which will be returning a function, returning the current object. So as the name of the class is matrix, so matrix submat, and here we will be accepting or storing with the class name, and this object will be the class object. So this is not a common variable or a simple variable, this is an object. So now we will be declaring an object for storing the matrix current in a current object. These programs are easy to understand, but you have to pay attention to every details, because if something is missing, the entire program is vague and it will give a syntax error or maybe a mathematical error. Now same we have to do for this m comma n. This will initialize the new matrix which will be stored in this object, that will again go to this and will be initialized with m and n size. Now we have to again start a loop. One inner loop. Now we have to call the array with the object. Like this is the new object B that will be storing the objects of the array. So b dot arr I j equals to arr I j minus, and here the object, this is capital F, sorry, there was a mistake on my side. Here we will compare the current object which we have passed and stored in this. So a dot arr ij. So here is the main thing. This is the new object that will be storing this array in it, and this object in which we are calling a dot arrij. This will be for the first matrix, and this is the matrix which we will be passing to this object, and this is storing the second matrix which will be used for this thing. So we have to give the computer the instruction that we have to use this object, current object A, for the matrix this. So the matrix elements of A will be used here. I hope that is clear. So after all these things, we have to give a return statement which will return it to the calling statement. Return B. Now we have to display it. Void display. Here we have to display here. For easy work, I have copying this.
just we have to print the new one. So now the main function, which is the main function public, these functions or these questions are usually quite lengthy, so this program will take a lot of time. But I can assure you that if you pay attention to this program, this will help you immensely in your coming exams. Now int n equals to 0, m equals to 0. We have to give the user the message. Now we have to create new objects, matrix M. This will create a new matrix and will pass the size m and n, and this thing will go to here, this function matrix, parameterize constructor, and will assign or create a matrix with the size m and n. Again it will return. Now we have to send this matrix for filling of the elements, so matrix fill array. Again one new matrix object, matrix K, new matrix m comma n. So again we have to send this for filling. This is the second matrix, as in the question it was two matrix, so this will be for the first matrix and this will be the second matrix. So again we have to send this for filling. So this is done, and now we have to create a one more object. As this question returns the new matrix, so we will have to take another or create another object that will be returning and taking the new matrix and storing in it, and we have to call the new matrix with the help of the first matrix and the second matrix. So new matrix P equals to new matrix, and this is also the same size, m comma n. And now we have to not send it to fill array, as we have to store here. So P equals to m dot sub mat function. Submat K. So this thing is calling the function submat and passing K here in the object A. So this is done, and now we have to display P as it is having the new matrix. And now we will compile the class, and here as you can see
class compiled and no syntax error. I need to pass. So number of rows I will be doing 3, columns also 3, and elements in the matrix. This is the first matrix I want to say. So 5, 8, 4, 6. So here, as you can see, this is for the first matrix. I have filled the first matrix. Now the second matrix starts. 9, 5, 2, 7, 9. So this is the current new matrix. Here, as you can see, that I have got this thing, the objects created, we have got the output, the difference, And this is the working program. मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन अच्छा हो. आज तक यही तक था. And I will return with a new topic the next class. So that's all for today. Thank you, students. This is Nissan Datta, aka the coder, and signing off. Thank you.